We will start our session today. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Allah madad farma. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Shukran lillah walhamdulillah, shukran lillah walhamdulillah. Welcome to all friends online. Today we are going to talk about this concept of angelicity. And this lecture, these are two parts lecture. Inshallah, next week we'll do the second part. This is inspired by all the questions I have been receiving. So what I have done, all the related question, I have kind of made a lecture out of it. नाचीज ने कुछ सवालात मेरे पास आए थे जिसकी वजह से ये लेक्चर बन गया है। इसकी वजह ये है कि जब हम लेक्चर की सूरत में एसोसिएशन बिल्ड करके कोई चीज को समझते हैं तो वो याद रखने में आसानी रहती है, बजाय इसके कि टुकड़े टुकड़े क्वेश्चन करें। हम इसको एक कॉन्सेप्ट की तरह अगर हम समझेंगे तो इंशाल्लाह हमारे याद में ये अच्छी तरह से रहेगा। So let us start with this session. I will try my best to talk in both the language. Bismillahirrahmanirrahim. All right, so I have some fun for you today. Look at this. A beautiful ice cream cone. And I am sure if we were to eat this cone, we will eat this cherry first. Beautiful ice cream cone in front of us. How amazing it is when we look at this cone. This is the most attractive part, most beautiful part, and all of us want to get to it first. One can start with eating the ice cream too, but no, we might like to start eating by cone. But somehow we all get attracted to this cherry because it looks beautiful. It is on top of the cone. Now this is an allegory which we are going to use to understand few things which we've been talking about. But remember, the more we build associations, the more we apply it on ourselves, it makes sense. तो तमाम साथियों को बहुत हैरत होती होगी आज एक आइसक्रीम कोन क्यों है हमारे सामने। हम इल्मी सेशन की बात कर रहे हैं और ये आइसक्रीम कोन कहाँ से आ गया। तो ये आइसक्रीम कोन को दिखाने का मकसद एक मिसाल देना है कि जब जब हम इस आइसक्रीम कोन को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ दिल चाहेगा कि हम इस चेरी को खाएं। कोई चाहे तो वो आइसक्रीम को भी खा सकता है, कोन को भी खा सकता है, लेकिन चूंकि चेरी टॉप पर है, ब्यूटीफुल कलर की है, अट्रैक्टिव है, सबसे पहले हमारा दिल चाहता है कि उस चेरी को हम खाएं। और चेरी का मकाम भी देखो कहाँ पे है कि वो सबसे ऊपर है। तो इसको मिसाल के तौर पे लेते हुए हम बात करेंगे। This is our ice cream cone and we are going to discuss it कि नीचे से ऊपर तक जाना है। When someone makes an ice cream, they have to start with picking up the cone and then ice cream and then comes the cherry. अब इसी मिसाल को जब हम अपने आप पे लागू करते हैं
सबसे पहले जब एक इस्माइली बच्चा होता है तो उसको ब्लाइंड फेथ सिखाया जाता है कि बेटा जमात खाने जाना है, 3 टाइम दुआ पढ़नी है, तस्बीह निकालनी है, दसून देनी है। ये तमाम चीजें जो होती हैं वो जिस्मानी दीन में आती है. दिस इज ऑल इनटू फिजिकल दीन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, Maula has given to us in his Farami. So according to his Farman, when we go to Jamaat Khana, when we say dua, tasbih, ginan, Farman, all what we do in Jamaat Khana, it is called physical deen. That's the first step. Then a Ismaili child will go to REC, night school or religious center. They will learn basic education. History सीखेंगे, कुछ तस्बीहात सीखेंगे, और eventually they will also learn about Baitul Khiyal. Somehow going to Jamaat Khana, attending majalis, sitting with family, talking about things in Jamaat Khana, we do come to learn about this Baitul Khiyal Mandi. And we do all learn that this is a voluntary commitment. And most of us, without having any advanced knowledge, we get into this mandi, Baitul Khiyal mandi. And when Imam says that I am going to give Isme Azam, most of us willingly go and take Isme Azam too. Why? Because it is like a cherry. Isme Azam is like a cherry. And remember, we also listen to this Faramin, right? Hakiki sukh ki kunji ibadat hai. And we all get attracted to Isme Azam, to ibadat, because we do realize there are so many difficulties in physical life, physical world, that if we have this key to Hakiki sukh, then probably we'll live in peace. We'll not get bothered by all the difficulties in our physical life. So we all somehow, without having advanced education, we get into getting Isme Azam and Baitul Khiyal. Now, when we continue to walk on the life, and if we are interested in knowledge, somehow we come to know about higher classes. Though Imam, Sultan Muhammad Shah and Hazri Imam, they have given Faramin about doing personal search, doing deeper studies of our tariqah. Hazri Imam in 2000 only has given Faramin that wherever there are ilm classes going on, you must attend those classes. Ilm classes. He's not saying REC, he's saying ilm classes. So somehow some of us come to know about ilm classes, and I would say because there is a spark in the heart, there is a desire, there is a wanting that I want to know more. There are questions in the heart. Those friends somehow come to know about this ilmi classes. Let it be Farman class, let it be Ginan class or Quran class, or all these together. When we come to know about these classes, we start attending these classes. However, it is completely by choice. बहुत से साथियों को जब इल्म की क्लासेस का पता चलता है, वो इल्म क्लासेस में तो आते हैं, लेकिन इसमें भी कैटेगरी होती है. There are some who would come and just listen. I feel good, shukr maula, alhamdulillah. I did my zikr by listening to ilm. That is enough. And some are those who want to continue to walk further. So there are different types of friends who would come. There are some who would come to ilmi classes and they will only see limitations. Oh, I'm so old. I don't know English. I don't know Arabic. Oh, I don't know Urdu. I don't know Gujarati. And they, again, whatever reasons, they may stay connected, they enjoy, or they may not enjoy, they give up, they see only limitations. But again, there are some who will see, based on the Faramin of Imam, Maula has said, Hazri Imam has said, that you are never too old to learn. So age is not a limitation. Languages, who from all of us can say, I know this language perfectly, completely? I don't think any one of us would say that.
We all are learning and growing. So can a language be a limitation? If we are willing to learn, language is not a limitation. Again, why do I say that? Remember, we have to have this reminder in our mind that when we say, मैं सीख रही हूँ, whenever there is I, we are into limitations, we are into problems, we are into fears, and we may get into bazi of shaitan. So knowledge is either sought with this courage in heart that Mola is ill, Mola will teach me, I will continue to work hard. When someone says that, they continue to walk further. Or there are some friends who will say, oh, this is too much for me to learn. There are too many expectations. Attendance is must. I cannot attend all the lectures. This is too much of homework. You know, so many excuses we can find, but what we don't realize, it is all shaitan ki bazi. We being Ismailis, we have no limitations. It cannot be language. It cannot be our age, or you bring any excuse. It is not a limitation. Why and how? Because we are spiritual children of Hazrat Imam. Hazrat Imam's duashes is with us. So if we were to take that farman of Hazrat Imam, which Maula gave to us in 2000 in Pakistan, in which Maula says that attend ilmi classes. And if we come to attend classes and let's say it is in a language which I don't understand, मुश्किल होती है समझने के लिए. English में होती है तो मुश्किल है, उर्दू है तो किसी और को मुश्किल है. Any language, take it. There are some friends who will say they are not happy about it. When we come to attend these classes and we come into this situation of language, but if we were to have this remembrance in our heart that if I'm attending these classes, I am becoming Farman Barda. I am following the Farman of Imam. And then we can say this dua in our heart. Maula, you know that I did not go to university level of education, so I know very limited. You know, Maula, I don't know Urdu very well. But Maula, be with me so I can understand. There are miracles, like for example, let me give you example of Pir Sabzali. In 1923, if I'm not wrong about the year, Imam Sultan Muhammad Shah gave a farman to Pir Sabzali to take it to Greater Badakhshan, northern areas of Pakistan, Russia, Tajikistan, all that, the whole belt known as Greater Badakhshan, China. Pir Sabzali says to Imam Sultan Muhammad Shah, Ya Maula, I am a Gujarati speaking person. I don't know their languages. How can I go and tell them this farman? What would I do? Maula says, don't worry, my Noor will be with you. And Pir Sabzali goes there, and there are friends who I have myself spoken to them, that Pir Sabzali at that time, when he delivered was, he was speaking in Gujarati. And there were Jamaati members, parents of my friends, that they heard these Faramin in their own languages. What? He was speaking in Gujarati and they were understanding in Brushiski? How did that happen? When Imam says his light, his Noor is with us, everything is possible. Do we believe in? If we believe in that, that miracle will happen to us. But again, it is our choice to believe in the miracle or continue to look at the limitations. नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आएगा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है. Wherever there is mushkil, there is difficulty, meaning that you have to probably pick up the dictionary. You have to look at the words and look for the meanings. And that hard work, if we are not willing to do, then this path is very difficult, no denying, very difficult. And Imam says that himself, that our tariqa, Sirat al-Mustaqim, is like a pull sirat. Talwar ki dhar pe chalna hai. Who can walk on sword? Tell me. We cannot. That's an allegory Imam has used.
So when we look at the limitations, surely we will have difficulties and limitations. But then I can tell you there are friends who don't know languages and they learn this knowledge because they don't see it as a limitation. There are friends who are 80 plus years old. They don't look at their numbers, their age. They learn beautifully, they work hard. So again, remember, जब हमें ईमान के फरमान पे अमल करना है तो कोई खौफ दिल में नहीं रखना है, कोई भी किस्म का, क्योंकि खौफ शैतान की तरफ से है। ईमान, हिम्मत, मदद इमाम की तरफ से है। We do want to stay in the corner where Imam is. हम मौला का लश्कर है, मौला के रूहानी बच्चे हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत रखनी है। Then with the knowledge we start learning about purification of deeds. Now remember, we always hear about these things. ऐसा नहीं है that we don't hear about purification deeds before. There are so many ginans which are talking about deeds. But truly paying attention when we are adult, when we are in advanced classes, and we are willingly in advanced classes, we want to learn to grow, we will pay attention and we hear about purification of deeds. Then one who is sincere, genuinely wants to walk further, will become mindful, conscious, living with different kind of fasts. Roza रखता है, कौन सा रोजा? There are different kinds of roza. Example I have given is of two, के खाने का रोजा, कम खाना खाना. क्यों? When we are hungry, when we stay hungry, it treats so many spiritual diseases. It does heal physical diseases too. Hunger is actually a treatment. कम खाना खाने से नींद कम आएगी, मस्ती, दुनियावी एनर्जी कम रहेगी जिस्म के अंदर, खुद ब खुद जिक्र में ध्यान लगेगा, दिल में से फितना करने का जो उत्साह होती है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। शैतान की जो एनर्जी है वो घर नहीं कर सकती है क्योंकि जान ही नहीं है। हर वक्त एक मोमिन सालिक हल्की भूख में रहता है, कभी भी पेट भर खाना नहीं खाता। So food is one example, and then speaking, talking less. Again, when we talk less, we do sin less. When we say mindful, conscious living, that is also being aware and conscious what thoughts we are thinking. कितने गुनाह हम सोच में करते हैं। अब ये मोमिन वो मोमिन है जिसने हिम्मत बांधी है, इल्म क्लासेस में आगे आए हैं, इसमें आज़म हासिल किया है, इल्म को समझना है, वो अपनी सोच को भी पकड़ के रखेगा, अपनी सोच पे भी ताले रखेगा, सोच को भी काबू में रखेगा, क्योंकि शैतान जो है वो हमेशा हमारे पीछे लग के सोचों में हमसे गुनाह करवाता है। तो सोच के गुनाह से भी हम बच के चलेंगे। रिमेंबर, जो पीर फरमाते हैं लोभ, मोह, काम, क्रोध, हसद, कीना, गीबत, all these guna can be done in our thoughts. Remember, all these sinning can be done with our thoughts. So we have to be very, very careful what thoughts we are thinking. Then comes the habit of doing more and more zikr. Now remember, the word zikr means yadgiri. Zikr means remembrance. And there are so many different kinds of zikr. First is zikr with tasbihat. A child, when he starts going to Jamaat Khana, we listen to this tasbih, Ya Ali, Ya Muhammad, Bibi Fatima ki tasbih. Grandparents at home taking our tasbih at noon or midnight. All these practices children see. But again, when we are in adult life, when we start doing tasbih, we never do any tasbih without completely understanding its meaning. Because we come to learn that we are not parrots anymore. Samajh ke karna hai. And ilm, when we attend ilm classes, that is also zikr. When we do ibadat, nurani time ibadat, that is also zikr. Zikr word is encompassing word. It means remembrance. Any kind of remembrance. Through nurani time isme azam bandagi is zikr. Tasbih karna, zikr. Right now we are doing ilmi zikr. So zikr is very broad term.
What happens with that मोमिन सालिक? वो बहुत जिक्र में लग जाता है, कभी तस्बीह करता है, कभी इल्म पढ़ता है, कभी लेक्चर सुनता है, कभी नोट्स बनाता है, वो हमेशा जिक्र में मसरूफ रहता है. एंड देन कम्स, जब जिक्र बहुत बढ़ता है तो दिमाग की सोच जो हमने काबू की है अब इल्मी जुगाली शुरू होती है. दिमाग जो हमेशा इल्म में लगा रहता है, ऐसे मोमिन की नींद खुद ब खुद कम होती है. A momin who does zikr in abundance, automatically his or her sleep will decrease too. And surely there will be an intention to, desire to decrease the sleep. When we sleep less, we do more bandagi. And there are two important terms I must tell you, that when Mumin Salik wants to elevate themselves in doing more and more zikr and come close to Nur of Imam, there are two terms which you will hear, which is Shab Bedari and Shab Khazi. Shab Khazi meaning you stay awake whole night, you never go to bed. You sit with like-minded friends and you make an intention कि आज तो पूरा रात जिक्र करेंगे. इमाम की तक नशीनी आ रही है, आज तो पूरा रात जिक्र करेंगे, नवरोज है पूरी रात जिक्र करेंगे. That is Shab Khazi, like-minded friends getting together, and the way we do it in Shab-e-Qadr night, the whole night zikr. These kind of intentions like-minded friends can do. Sit a whole night and do zikr. Shab Khazi. And then other is Shab Bedari. The word Bedar means to wake up. Shab means night. रात को कुछ घंटे हम सोए और फिर उठ के हमने शब बेदारी की. That is called शब बेदारी की इबादत. All these actions are taken by that Mu'min and Salik to follow the Faramin of Imam, to come close to the light of Imam. Why? There is a realization, there is a desire, there is knowledge now, and now actions are consistently changing. At the last level, second last level, I would say, one starts getting knowledge. Which knowledge? Advanced knowledge, higher level of knowledge, tawili knowledge, full of wisdom. This Mu'min and Salik who comes to that level, they realize that there is no life, there is no joy in the life without true knowledge. There is no progress in spirituality without true knowledge. They become consistent. Here, when they come here, after passing all these stages, here they become consistent. Again, Shaitan is here too. It's not that Shaitan is not there. But this stage becomes easy when we are with like-minded friends. If we are trying to do everything alone, it can get very, very difficult. Knowledge and wisdom becomes part of life. And that Mu'min Salik makes that the purpose of the life, that I need consistent in doing my ilmi zikr. And when they start getting this higher level of knowledge, tawili knowledge, what happens, their physical, spiritual, and intellectual being becomes more and more connected. We have life at three levels, but we are not connected. Dhyan kahin aur hai, jism kahin aur hai. For example, when we are sitting in Jamaat Khana, physically we may be sitting in Jamaat Khana, but in Dhyan, we are at home or at work or somewhere else. The more and more Mu'min and Salik is taking interest in knowledge and wisdom, full knowledge, the gap between the physical body, spiritual body, and intellectual body starts connecting more and more and more. Why? Because intellect, which is the highest part of a human soul, starts getting nourishment. When akal is strong, it is able to connect, control thoughts, physical actions, becoming mindful. All this becomes very interconnected being, very conscious, mindful human being. Then actually comes the part of cherry, Isme Azam with Ishq. If we have not crossed these parts, we will repeatedly have this question, क्यों इसमें आजम नूरानी टाइम में ध्यान नहीं लगता है? क्यों नूरानी टाइम पे ध्यान नहीं लगता है? Because what we did,
We did not have knowledge and we got this maaz. And surely we heard Farameens, Hakiki Sukh ki kunji ibadat hai. Beshak. And now that we'll go on the journey of studying different farmans to realize how selective we are in taking farmans and working on it. We follow farman very humbly based on convenience, not conviction. And what happens when we are not looking at the totality of farmans, we miss very important work which we need to do ourselves. And what we do, we constantly look at this cherry. How do I get this cherry? How do I get this cherry? But this cherry is standing on this big cone. First, there has to be this cone part and then ice cream part, and then comes the cherry. We cannot get to this cherry until we have worked hard making this full cone to get to the cherry. But whenever we sit in ilmi classes, when we discuss, we all ask this question. Dhyan ko nahi lagta hai? Dhyan kyun nahi lagta hai? What do I do? We need to do all these things to be able to truly connect with our bowl. That word, that supreme word which Imam has given to us with his Mukh Mubarak. And again, if it is only word, it is only word then. How about saying that beautiful name with love in our heart? How would we have that? Now, when I look at this cone, you know, I can think of cones, somebody can describe it to me, but when I'm looking at this, it is so beautiful, looks so yummy. Ishq cannot be there if I'm not able to see. And how do I see? How do I develop this love? Cannot be developed if I have not gone through these stages. Here is the gap. I hope that this example is helping us understand and identify where are we standing and what are the gaps. Now let's look at this farman. Imam Sultan Muhammad Shah, Mawla says that we are always with angels. Two angels are always with us, writing our deeds. And it depends on us as human. We can behave like a smiley mumin outside. We can say, yes, we are smiley. We have Ismail Azam. We go to Jamaat Khana. We follow the Imam. Externally, one can be a believer. What is happening internally? These two angels are writing everything. Everything. Nothing is hidden from these angels. मौला जाने चित की चोरी, that Ginan verse, जब हम सुनते हैं कि मौला जाने चित की चोरी, how does मौला know? Because मौला's, these angels, जो दो फरिश्ते हमारे साथ हैं, they are writing everything. Outside, no matter how we behave, it does not matter. What matters कि अंदर हमारे क्या चल रहा है. And मौला says, know my farmans invaluable. हमारे फरमान को कीमती जानो. अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर हमारे फरमान को आम समझोगे, तो तुम्हारा नुकसान होगा. My farmans are invaluable. Do not take it as ordinary. Then another farman, Mullah says, at midnight from heaven, every night, हर रात को रात के 12 बजे फरिश्ता उतरता है. क्या कहता है कि है कोई जो खुदा से मांगे तो मैं उसकी दुआ कबूल कराऊं. लिटरली एक फरिश्ता आसमान से नीचे आता है, देखता है किसके घर में कौन जाग रहा है, किसके घर के अंदर जिक्र चल रहा है, ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, वो मोमिन जो मांगे उसकी दुआ कबूल करूं. Now question here would be, how many of us have developed that habit of sleeping less and doing more zikr? Again, we need to look into ourselves. Two conditions of human. Imam has very clearly told us that there are two conditions of human.
and it is in our hands. मौला इस फरमान में फरमाते हैं कि इंसान के लिए एक रास्ता जानवर का है और एक रास्ता फरिश्ते का है। अब हमें फरिश्ता बनना है कि जानवर की हालत में रहना है, ये हमारे हाथ में है। Look at these words of Imam. Imam says, the persons like donkeys come to me and ask. This is in Betul Khayal Farman, if I'm not wrong. Imam is saying, these Jamaati members are coming to Imam, and Imam is calling them donkeys. Imam is merciful Mawla. Why would Mawla say that? You know what donkey's characteristic is? Donkey, if you load the weight, it will carry such a heavy load, but it will not use its intellect. Donkey is willing to work hard, but does not want to use intellect. That is the example Mawla is giving to us. That those who do not work with their intellect, जो जमाती members अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इमाम उनको कहते हैं गधे जैसे लोग हमारे पास आते हैं, सवाल करते हैं कि हम क्या करें मौला, हमारा ध्यान जो है वो इबादत में नहीं लगता है, हमारा इसमें आज़म भी ज़बान पे है। पता है मौला क्या जवाब देते हैं? मौला कहते हैं कि मैं क्या जवाब दूं, मैं मेरे कान आंख बंद कर लेता हूं। इमाम is saying that, इमाम is saying that कि मैं अपने कान आंख बंद करके खामोश हो जाता हूं। Can we imagine Imam's frustration, Imam's disappointments? Now this Farman is 1903. Does this question look familiar to us? Do we hear this question again and again and again and again? What we do, our thought is in the world and the ibadat is also verbal. Imam has answered us, person like donkeys. And if people like donkeys keep asking this question, you know what Imam is saying? I have to shut my ears as such and remain silent. Imam is not willing to give answer to these dua. Imam is shutting his ears because the person who is asking this question, they are like donkeys. So now imagine, this is harsh and I seek forgiveness. This is for us, each one of us, for us to learn, okay? This is not to judge anyone. Please remember that. We are in an environment when we are trying to learn and improve. Someone goes to morning and evening Jamaat Khana, has Isme Azam, pays the son, does everything. But if does not use intellect and keep asking these questions in the heart that Mawla, mera dhyan nahi lagta hai, main dua karta hu, mera dhyan lage, main barabar ibadat karu. What does Imam say? ऐसे जब लोग आते हैं, गधे जैसे लोग, इमाम कहते हैं मेरे कान बंद कर देता हूं और खामोश हो जाता हूं। अब ये मोमिन जो है वो दुआ करता है, मौला मेरा ध्यान नहीं लगता है, मौला मेरा ध्यान नहीं लगता है। मौला ने तो कान बंद किए हुए, मौला ने कान बंद कर दिए हैं और खामोश बैठे, मौला नहीं सुन रहे। क्यों? थक गए मौला हमें बता के कि क्या करना है हमें। फिर मौला फरमाते हैं, you reflect in which station you have reached. Your dignity and precious time are to recognize the soul. इमाम फरमाते तुम खुद सोचो कि तुम किस मकाम पे हो, कहां पहुंचे हो। तुम्हारा दर्जा, तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम अपनी रूह की शनाख्त करो, रूह की पहचान करो। मन अरफा नफ्सही फक़द अरफा रब्बही, कि जिसने अपनी रूह को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। जब तक हम रूह को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम खुद सोचेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे कि हम कहां हैं, इमाम कहते हैं मैं खामोश रहता हूं। अब ये भी एक इमाम का फरमान है, हमारे पास दो रास्ते हैं, चॉइस हमारी है, हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। And we do know this फरमान, we have studied it very many times, कि जानवर का रास्ता है जो कि जिस्मानी है। Do you remember physical deen? हमने जो बात की थी, physical deen. How many of us are still following physical deen? जो रास्ता रूह का है वही हकीकत में फरिश्ते का रास्ता है। So there are many friends who are asking कि फरिश्ते की बात जो आप करते हैं इसके क्या मतलब है। तो इस जर्नी में इंशाल्लाह we will understand कि फरिश्ता कैसे बना जा सकता है।
क्या मतलब है जब हम बार बार फरिश्ते की बात करते हैं? लेकिन इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम जिस्मानी दीन छोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली फरिश्ते के रास्ते पे चल पड़ते हो, क्योंकि फरिश्ते का जो रास्ता है वो हमें जन्नत की तरफ, हमें आगे लेके जाता है, 7वें आसमान तक लेके जाता है। अगर तुम इस रास्ते को छोड़ दोगे तो तुम जमीन पे पड़े रहोगे। जमीन मतलब क्या? सबसे नीचे का दर्जा, सबसे नीचे का दर्जा। नीचे के दर्जे को 7वें आसमान तक कैसे वो जा सकता है? जब तक वो मेहनत नहीं करता है तब तक वो 7वें आसमान तक नहीं जा सकता है। लेकिन उस मेहनत करने के लिए क्या करना है? मेक अ चॉइस, वी हैव टू चूज एंड देन वर्क ऑन इट। फिर इमाम फरमाते हैं कि अमाल की पाकीज़गी। मौला फरमाते हैं, योर वन हैबिट इज मच रॉन्ग टू विच आई एम मच डिस्प्लीज्ड एंड अफ्लिक्टेड, एंड दैट इज देयर इज मच ग्रज एंड जेलसी अमंग यू। हसद है, दुश्मनी करते हैं एक दूसरे से। अपने जमात में, अपनी फैमिली में, अपने भाई बहनों में हसद करना, दुश्मनी करना बहुत ही बड़ा गुनाह है ये। इमाम फरमाते हैं कि हमारे जो दिल है ना वो आईने की तरह साफ होने चाहिए, लिटरली क्लीन प्योर लाइक मिरर, कि मिरर में अगर हम खड़े हो जाएं तो हमें अपना रिफ्लेक्शन नजर आए। लेकिन अगर हमारे अंदर हसद, कीना, बुग्ज, जेलेसी, जजमेंट, गीबत, ये तमाम बुराइयां हैं, हमारा दिल पाक नहीं होगा। तो उस दिल को कैसे हम तैयार करें कि इमाम की तशरीफ आवरी हो, कि इस दिल में मौला विराजमान हो, तो मौला के दीदार करें। जो इसमें आजम का जो माजिजा है वो हमारे दिल के अंदर होता है। दिल में तो हसद, कीना, गिबत बढ़ी हुई है, तो हम वहां कैसे पहुंचेंगे? इमाम फरमाते हैं कि अगर तुमको खुदा के करीब होना है, अगर तुमको इसमें आजम में ध्यान लगाना है, इसमें आजम के नूर को देखना है, you do need to become like angels. You do need to become like angels. Mola says, cleanse your hearts like mirror. अगर दिल के अंदर खराबी है, आईना साफ नहीं है दिल का, तो कभी भी सूरज की रोशनी नहीं दाखिल होगी इसके अंदर। हमारा मिरर जो है वो कभी भी साफ नहीं होगा। A mumin salik's heart is so clean, so pure, so beautiful that you would be able to see the reflection of Imam's love, Imam's mercy through the heart of that mumin salik. ऐसा एक मोमिन का दिल पाक और साफ होता है। लेकिन वो दिल साफ कैसे होगा? जब हम दुश्मनी, हसद, कीना, लालच, ये तमाम बीमारियों को अपने दिल से निकाल देंगे। इमाम फरमाते हैं कि तुम choose to be virtuous, not like shaitan. Can you imagine that we can choose to be like shaitan? We can choose to do so. When we don't have knowledge, right? We do not even know how we are sinning. We become the army of shaitan and we continue to choose to be following the shaitan. Imam says, be vigilant. Do not be following the shaitan. शैतान सिर्फ हमसे बुरे काम ही कराएगा. So then it will inflame me at large. मौला says कि this will, मुझे जो है इसका दुख होगा. मौला फरमाते हैं कि हम मेहनत करके यहाँ आए, इतने फरामीन के क्या फायदे? हम दुनिया में तुम्हारी रूह के लिए आए हैं, हमने मेहनत करके यहाँ आए, तुमको इतने फरामीन करे, उसका क्या फायदा? If we don't follow Imam's farman, we continue to follow shaitan. Imam says, what is the benefit if I'm working so hard for my Jamaat? Do not do anything to cause my farman and exertion worthless. ऐसा कोई भी अमल नहीं करो जिसमें इमाम की नाफरमानी हो. इमाम जो मेहनत करके हमें समझाने के लिए आए हैं, हम उस बात को समझें. हमें फरिश्तों की तरह बनना है, शैतान की तरह नहीं बनना है. इमाम्स प्राइड. इमाम कब हम पे फख्र करते हैं? मौला फरमाते हैं कि I must hear that the followers of the Aga Khan are like angels. Imam, very with pride, Imam is saying that anyone who sees Ismailis, people would say, oh, they are like angels. If you act like it, then it will profit to your deen.
हमारे दीन को फायदा होगा अगर हम हमारे आमाल में अच्छे हैं. Imam says, I'll be very happy and proud to hear when others would say, oh, मौला के जो मोमिनीज है, जो फॉलोवर्स है, वो तो फरिश्ते की माने हैं. Ismaili deen is of truthfulness. You act with such truthfulness. Become like angels. All may applaud you. तमाम आपकी तारीफ करें. तमाम आपकी तारीफ करें. Observe virtuous deeds like angels, so that the people may say, how are followers of Aga Khan like angels? ऐसा कैसे है कि इस्माइली जमात के जो मेंबर्स हैं वो फरिश्तों के जैसे हैं? मौला फरमाते हैं, become like diamond, so that it may shine if kept in darkness. This is Imam's expectation. कि जहां पे अंधेरा है, जहां पे डार्कनेस है, जहां पे बुराई है, वहां पे कोई एक इस्माइली मोमिन आता है, वहां पे चमक रोशनी हो जाती, जैसे डायमंड आ गया है. कैन यू इमेजिन? ये इमाम की एक्सपेक्टेशंस है. और ये मौलाना हाजिर इमाम की स्पीच. I have intentionally not taken Imam's farman because there are so many farmans you would find of Hazri Imam talking about ethics. This I intentionally picked up a speech. Why speech? Because Imam is giving this speech to all the other people, right? Including Jamaati members, but all the humanity. And look at Imam's words. Mullah says, when a construction company cheats on the quality of materials for a school or a bridge, when a teacher skims on classwork in order to sell his time privately, when a doctor recommends a drug because of incentives from a pharmaceutical company, when a bank loan is squeezed by kickbacks, or a student paper is plagiarized from the internet, when the norms of fairness and decency are violated in any way, then the foundation of society are undermined. This Imam is giving a speech to humanity. What do you think Imam's expectations are from us in our ethics, in our deeds? क्या Imam की उम्मीदें हमसे हैं? And remember here, we'll have to remember this example of Ismail Ganji, right? Who used to cheat. When he used to do business, he would take more money and give less material to people, to customers. And when he listens to this Ginan, Seth kahe samlo waro tar, tame varan jaruro kari lavjo. There's a Ginan in which Pir is teaching us that don't be cheating, don't be doing the business of loss. What is that business? Business of spirituality. In the world, if we cheat in any context, whatever capacity we are in, if we cheat in our work, this is Imam's speech. Imam has given an example of a student, banker, doctor, teacher, construction company, builder. I am sure we can all apply it on ourselves. Where are we lacking in our ethics? And this is Maula is saying to humanity. Imam's farmans, we all know about it. If this is what Imam's expectations are to us as Ismaili Jamaat, where are we standing? Again, each one individually, we have to look into it. What is Imam's hidayat for us? You reflect in which station you have reached. Your dignity and precious time are to recognize the soul. हमारी जिंदगी का मकसद, हमारे पास जो भी वक्त है, वो उसका मकसद जो है, अपनी रूह की पहचान है. Nothing else. The believer's vision always is directed to go upwards. जो ईमानी है, जो मोमिन सालिक है, उसकी निगाह हमेशा ऊपर जाने की होती है. He always is wanting to climb up the ladder. The aspirations of the believer is such that I may become an angel and reach the status of Jibreel. मौला फरमाते हैं कि जो मोमिन है, उसकी निगाह हमेशा ऊपर जाने की होती है. वो कहता है मैं तो फरिश्ता बनूंगा और उससे भी आगे पहुंचूंगा जिब्राइल के दर्जे पे. जिब्राइल के दर्जे पे? जिब्राइल वो फरिश्ता है जो पैगंबर के पास वही लेकर आया. Can we become Jibreel? Imam is saying yes, we can reach at the status of Jibreel. How is it possible? If Imam is saying it is possible,
Today we are asking question how to become an angel. Imam is saying, why only angel? So when we say angel, remember we have to know these terms. Alame Nasu, the world of humanity. We all came to this world as humans. It's the world of humanity, Alame Nasu. And then comes Alame Malakut, which when Imam says that you have come to this world as humans, but you can not behave like animals and become an angel, meaning from Alame Nasut to go into Alame Malakut, the world of angels. Now, when Maula talks about Jibrail, that is not Alame Malakut, that is Alame Jabrut. जब इमाम फरमाते हैं कि आप दुनिया में आए तो दुनिया में दर्जात हैं, दुनिया भी अलग अलग है, इंसानों की दुनिया, फिरिश्तों की दुनिया, आला फिरिश्तों की दुनिया. तो अगर कोई इंसान है, मौला फरमाते तुम इंसान में पैदा तो है, इंसान और जन्म तो मैं लो, जानवर बनना है कि फिरिश्ता बनना है, यानी आलम नासूत से आलम मलकूत में आए. इमाम कहते हैं आलम मलकूत क्यों? आलम जबरूत में जाओ, जहां जिब्राइल बन सकते हो तुम. So for a smiley moment, there is no limitation. Literally, there is no limitation. Mola says the human races of Adam, status of Adam was above the angels. Now, Adam was a mustajib. He was not, Pegambar Zada. He was not from the family of prophets, but he was mustajib. When he got his Isme Azam, he had the knowledge. He worked hard in learning the knowledge, worked hard on Isme Azam, completed his Isme Azam within 40 days. Why was he able to complete in 40 days? Because he already knew. He had this knowledge, but when he was given the Isme Azam, the way he worked on the Isme Azam with purification of the deeds, being an angel, and he was able to complete his Isme Azam. And his status, we do know, he became a prophet. Similarly, Maula says that you are Adam ki औलाद. हम भी जो है वो फरिश्ते और उससे भी आगे बढ़ सकते हैं. सुस्ती की जिसने, जो शैतान की बाजी में रहा, वो नहीं बढ़ सकता है आगे. मौला फरमाते हैं कि you adopt the skill that your souls become like an angels. तुम चाहो तो तुम फरिश्ते बन सकते हो क्योंकि तुम आदम की औलाद हो. अगर तुम्हें अपने मजहब के माना समझने हैं तो तुमको जानना होगा जो इन माना को तुमको समझा सकते हैं, जो तुमको इल्म दे सकते हैं, उनसे इल्म हासिल करना होगा. If you at least understand what your soul is, फिर शैतान तुमको बाजी नहीं दे सकेगा. तुम समझोगे इल्म से अपनी रूह को, अपने मजहब को अकल से समझ लोगे, फिर बाजी में नहीं आओगे. अब हम गिनान को देखते हैं. गिनान में जो है ये सलोको वर्स नंबर 188. It is saying, Sadgur kahere amara dharam mahe je jiv raya ane tene che amaro rang tene ali hete su hurao dise ane tene dise ghana ghana man. The true guide says, the souls that have remained in our religion remain consistent, have our color attributes. Imam ke रंग में रंग गए, नूर के रंग में रंग गए. किस तरह से? फरमानबरदारी से. The Lord will bestow upon them with love the angels and will shower them with a lot of respect and honor. उनका दर्जा जो है वो ऊंचा हो जाएगा. फिर फरमाते हैं, सदगुरु कह रहे पूरा माहे जाए ते जीव रहसे तेनु अमरा पूरी माहे वास ते घर अमे जाई बेसु तेनु करसु घणु मेमाए. The true guide says, these souls will go and stay among us the angels and their abode is in paradise. जो मोमिन सालिक अपनी तरक्की कर लेते हैं वो फिरिश्तों के दरमियान में बैठते हैं, जन्नत की सैर करते हैं, जन्नत में बैठते हैं. We will go and sit in these houses and will accord them with grandeur and dignity. Imam, Peer will be sitting in these houses. कौन से घर? जो दिल है उनके, जो मोमिनों के दिल है. Are we eating this cherry in a right way, properly? Are we just attracted to look at the cherry and we are focusing on the cherry and we are missing the hard work which is needed to be done to get to the cherry?
This is something we need to think and reflect. Without these building blocks, it is difficult to get there. So inshallah, we'll continue with our study next time. If any friends have any questions, shukran lillah walhamdulillah, shukran lillah walhamdulillah. याली मदद नियामत भाई, जी मेरी जान जी। नियामत भाई मैं सेकंड स्लाइड एक बार दिखाओ ना प्लीज। सेकंड स्लाइड। हाँ मैं राइट लिख रही थी तो मिस हो गया थोड़ा। ओके, थैंक यू सो मच। शुक्र मोहम्मद। तमाम स्लाइड्स आपको दी जाएंगी, आपको पता है ना ग्रुप में। ओके भाई माँ। ओके, स्लाइड्स आपको मिल जाएगी, स्लाइड की फिक्र नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर कोई सवाल है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आई वुड लाइक यू टू आस्क द क्वेश्चन। नहीं भाई माँ, बहुत अच्छा था, क्लियर है एकदम। बस हम लोग को अपने आप को और हार्डवर्क करना है और रिमेम्बरेंस में रहना, और थॉट्स का जो आप बोले ना गुना, वो पकड़ना है। एक्चुअली वहां बहुत गड़बड़ करते हैं हम लोग, मतलब मैं करती हूँ बहुत सारा, सॉरी, बट आज वो क्लियर हो गया। शुक्र शुक्र मौला। गुलजार, यू बी सरप्राइज्ड कि मुझे यहाँ पे एक सवाल नजर आ रहा है जो प्राइवेटली किया गया है। वो ये है कि हम कैसे अपने ख्यालात को पाक करें। हाउ डू वी प्यूरिफाई आवर थॉट्स। सो अगेन रिमेंबर, इट इज अ प्रैक्टिस, इट इज अ प्रैक्टिस। किस तरह से कि जब हम सबसे पहले तो नियत करते हैं, वी हैव टू ऑलवेज सेट एन इंटेंशन व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, व्हेन वी गो टू बेड। अच्छे ख्यालात की, पाकीज़गी की, ईमान की सलामती, जो हम तमाम चीजें सीख रहे हैं उसकी। But what happens that during the daytime, the more and more if we are into zikr. Remember, zikr के भी दर्जात हैं. When we are saying tasbih, it is very possible that we are doing zikr with our tongue. याली याली याली, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हमारा जहन कहीं और चला जाता है। इसलिए बहुत मैटर करता है कि लेट्स से अगर हम अल्लाहु अकबर की ही तस्बीह को लेते हैं, इसके डीप में जाके लिटरली स्टडी दिस तस्बीह इन डीप, अंडरस्टैंड दिस मीनिंग कि इसके माना किस तरह से है, राइट डाउन द नोट्स, उसको रिफ्लेक्ट करना, उसको थिंक करना। फिर जब हम अली अल्लाह जब बोलते हैं ना, अली अल्लाह अकबर, तो क्या होता है कि एक उसकी तस्वीर, नॉलेज की वजह से उसकी एक तस्वीर, उसका एक खाका, एक फॉर्मेट हमारे दिमाग में बन जाता है। What happens when we learn the zikr with its meaning, and when we are doing that zikr like that, our intellect is connected with it. Until we are not connected intellectually with anything we do, जहन बाहर चला जाएगा। तो ध्यान को पकड़ने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं। सबसे पहले तो अकल का इस्तेमाल। शुरू में अकल का इस्तेमाल मुश्किल है, तो आप, जैसे आपने कहा, आई लाइक इट कि गुलजार आप नोट्स लिख रहे हैं और आप सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं और आप अमल करने का सोच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली हैज स्टार्टेड। उस रिफ्लेक्शन को कांस्टेंट रखना है, और कोई भी काम करें, कंटिन्यू दैट रिफ्लेक्शन, कंटिन्यू दैट कनेक्शन। एंड देन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिक्र करते हैं, राइट, अगर आप तस्बीह निकालते हैं, तस्बीह जबान से जोर से निकालते हैं तो कान भी सुनता है। So when you involve more senses into whatever you are doing, it will be more effective. जब आप इल्म गिनान सुनते हैं, तो अगर आप नोट्स लिखते हैं और फिर उसको दोबारा जाके पढ़ते हैं, it will retain more. You will be able to remember more. You will be able to understand. कहीं और लेक्चर सुना, कोई और बात सुनी, आप फौरन से मैच करेंगे, ओह, उस फरमान के माना आज मुझे समझ में आया, इस कुरानिक वर्ड्स की इस फरमान से कितना रिलेटेड बात है। तो क्या होगा कि एक अजीब व गरीब तरीके से हमारा माइंड विल ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ एनी काइंड ऑफ जिक्र वी डू। रिमेंबर, जिक्र इज रिमेम्बरेंस। जब हमारी ये प्रैक्टिस होगी तो ऑटोमेटिकली थॉट्स कम हो जाएंगे। रिमेंबर, थॉट्स खत्म नहीं हो सकते, वी आर ह्यूमंस, थॉट्स विल ऑलवेज बी देयर। यू नो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिप्लेसिंग द थॉट्स। जो दुनियावी थॉट्स थे
उसको हमने बदल के इल्म गिनान के थॉट्स में डाल दिया। जब हम कहते हैं ना मन ने मारो गुरु कहे मने मलो, जनरल इंप्रेशन क्या होता है कि वी हैव टू मारो, किल करना है। देयर इज नो किलिंग। मन कभी नहीं मर सकता है, सोच कभी खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आवर बीइंग। सोच हमारी जात का हिस्सा है, खत्म नहीं हो सकता है। इन रियलिटी उसको बदलना है, वी हैव टू रिप्लेस, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। नाउ आई होप दैट हम इल्मी क्लासेस इनफ अटेंड कर रहे हैं कि वी वुड अंडरस्टैंड दैट व्हेन वी से मन ने मारो गुरु कहे मने मलो, तो जो मन है यहाँ पे कार्नल सोल की बात हो रही है, नफ्से अम्मारा की बात हो रही है। तो नफ्से अम्मारा को बदलना है नफ्से लवामा में, मारना नहीं, मार नहीं सकते हैं। तो थॉट्स को बंद या खत्म करने की बात नहीं हो रही है, की इज टू रिप्लेस इट। इनफैक्ट जब हम इल्म गिनान, इल्मी जुगाली करते हैं तो दिमाग इतनी तेजी से चलता है, इतनी तेजी से चलता है, और इतना मजा आता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली इल्मी नुकात को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमारा जहन जो है, हमारी सोच जो है वो उसके अंदर लगी रहती है। और आपको पता है ना कि व्हेन वी कंटिन्यू टू वॉक ऑन दिस पाथ, जब तरक्की होती है तो चेंज पता है कहाँ आता है? सबसे पहला चेंज हम कहते हैं आलम ख्याल, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। हमारी थॉट्स चेंज होती, अब हम एक जिक्र कर रहे हैं अल्लाह अकबर, and then we will have this imagination, Allah Akbar is such a supreme big huge name, Allahu Akbar, Allah। अब उस सोच को लेके अब हम तस्बीह कर रहे हैं तो इतना इंजॉयमेंट आता है तस्बीह का, क्योंकि अकल भी साथ है, रूह भी साथ है, और जिस्म भी साथ है उसके। तो इट इज अ प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे ये आदत बनती जाएगी, और आदत बन गई फिर खत्म हो गई बात। इन द बिगिनिंग जब हम प्लेन में बैठते हैं, कोई नई चीज जब प्लेन को स्टार्ट करना होता है तो 1 इंजन 2 इंजन 3 इंजन सारे इंजन शुरू होते हैं, इतनी जोर की आवाज आती है, कान में दर्द होता है, हमें घबराहट होती है, यू फील नॉजिएटेड समटाइम्स। लेकिन एक दफा प्लेन जब उड़ जाता है और जब चल रहा होता है आसमान पे इतनी ऊंचाई पे, हमें फील भी नहीं होता। हम वॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं प्लेन में, वी डोंट फील एनीथिंग। लेकिन वही प्लेन जब फ्लाई करने वाला होता है तो कितनी तकलीफ होती है। When we are working on building a habit, it is hard, it is difficult, but eventually when we stay consistent in practice, it becomes easy. Now there's another question. As you said about our intellect, so my question is, what is difference between mind and here, and how they're both connect with intellect? So I think if I'm understanding your question, कि हम जब कहते हैं कि माइंड, राइट, माइंड मतलब मन, लोअर माइंड जिसको कहा जाता है, मन कहते हैं जिसको, कार्नल सोल। और जब हम सुनने की बात करते हैं तो कैसे अकल कनेक्ट होती है। लोअर माइंड जो है वो हमेशा शैतान के कब्जे में होता है, राइट। नफ्से हमारा ऑलवेज वांट्स यू नॉट टू डू जिक्र, नॉट टू थिंक ऑफ जिक्र। लेकिन क्या होता है, जैसे हम जिक्र करते हैं, अगर मैं कहूँ या अली अल्लाह अकबर, कोई भी जिक्र मेरी जबान से जोर से कर रहे हैं, कान सुन रहा है और ध्यान जो है उस तस्बीह को के माना पे गौर कर रहा है। कैन यू इमेजिन? लेट मी जस्ट डू एक डेमोन्स्ट्रेशन, सिंपल, राइट। अगर हम तस्बीह निकालते हैं या अली या मोहम्मद, या अली या मोहम्मद, या अली वो इमाम है जो पहले इमाम थे साइकिल के, अस्सास इमाम थे। पैगंबर पे कुरान नाजिल हुई, हदीस सकलैन हजरत इमाम ने गोल्डन जुबली में दी थी। डू यू रियलाइज कि किस तरह से थॉट्स पे थॉट्स हम थॉट्स कर रहे हैं, लेकिन दे आर रिलेटेड टू दिस पर्सनालिटीज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, या अली या मोहम्मद, दीज आर पर्सनालिटीज। तो हमारा जबान जो है अब वो जिक्र कर रहा है या अली या मोहम्मद, लेकिन हमारा जो जहन जो है इस या अली और या मोहम्मद के साथ है, और समहाउ इस जिक्र के साथ इल्म की भी सोच हो रही है हमें, और हम इस जिक्र के साथ हैं। And a time will come when we continue to practice the majesty of Maula Ali, हमारे इसने आलीशान इमाम, हमारे पैगंबर जिसने ऐसी किताब कुरान लाई, उसका जो गलबा है, उनकी पर्सनालिटीज का जो प्रेशर है, जो गलबा है, जो अहमियत है, जो इज्जत है, वो हमारे दिल दिमाग सब पे छा जाएगी। और जब हम तस्बीह निकालेंगे या अली या मोहम्मद, तो बहुत दिल से तस्बीह निकलेगी।
तो मेरे माना जो थे वो इस माना में थे. I hope I have answered your question. Now I see another question. Okay, let me read it. Our thoughts are same as of our consciousness? If yes, then how do we understand the difference between the world of thoughts and the world of imagination? So यहाँ पे words, remember अल्फाज में गड़बड़ करते हैं. The word consciousness actually is meaning कि हम mindful हैं. जैसे मौला फरमाते हैं ना कि होशियार रहो. It is being conscious. सोच जो है वो कॉन्शियसनेस जो है वो सोच को कंट्रोल कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर नॉट कॉन्शियस, कोई हमारे सामने से गुजर गया, कोई हमारा दोस्त, हम जमात खाने में गए, एक मिसाल जो हमने शायद सुनी हो पहले कि कोई जमात खाने में हमारे पास से गुजर गया, यारी मदद भी नहीं किया हमने. हाँ भाई, अभी तो है आजकल जो है पता नहीं क्या हो गया, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, यारी मदद करने से भी गए, पता नहीं क्या अपने आप को समझती है. ये सोच जो है, एक चीज देखी और सोच शुरू हो गई. इट कीप्स गोइंग ऑन. अब हम जमात खाने के अंदर है, दुआ पढ़ रहे, पता नहीं ये हुआ, पता नहीं वो हुआ, पता नहीं क्या बोला, क्यों उसने मुझे याली मदद नहीं किया. थॉट्स हैं उस माइंड की जहां पे कॉन्शियसनेस नहीं है. कॉन्शियस माइंड होगा, वो देखेगा. अगर इल्म वाला है, आई एम श्योर शी इज मेंटली ऑक्यूपाइड, कुछ दिमाग में कुछ फिक्र होगी, परेशानी, जब मिलेगी आमने सामने तो याली मदद करेंगे. फौरन से कॉन्शियसनेस ने उस नेगेटिव जो नजर आया नेगेटिव, शैतान ने परसीव कराया नेगेटिव, इंटेंशनली कॉन्शियसनेस ने उसको कन्वर्ट किया. इट्स ऑल पॉजिटिव, इट्स ऑल ऑलराइट. अपने ध्यान को, अपने सोच को शैतान के कब्जे में जाने नहीं दिया. ये मिसाल है कॉन्शियसनेस अबव द थॉट्स. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. ये वाली मदद, ये फायदा है इल्म में रहने का. आमीन. शुक्र शुक्र मौला. अब दोबारा इस बहन ने क्वेश्चन किया है कि माइंड और हार्ट, ओके, हमारा दिल और हमारा मन में क्या फर्क है और अक्ल का क्या मकाम है. अगेन ये तमाम टर्मिनोलॉजीज हैं, वर्ड्स में हम फंस जाते हैं. इन वर्ड्स में से निजात का तरीका है वो इल्म क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना और खुद पर्सनल सर्च करने से हमें ये चीजें समझ में आती रहेंगी. माइंड जो है वो लोअर माइंड, मन की बात की गई है. दिल जो है, लेट्स से वो इमाम के रहने का घर है, लेकिन जिस दिल के अंदर नापाकीज़गी है वहां तो मक्खियां, मच्छर, गंदगी है, इमाम का घर नहीं हो सकता है. अक्ल जो है वो सबसे हायर लेवल है, रैशनल सोल जहां पे है, राइट, सबसे ऊंचा मकाम है. जिस नफ्स अम्मारा, जो मन नफ्स अम्मारा के कंट्रोल में है, कार्नल सोल के कंट्रोल में है, उस दिल के अंदर सिवाय नापाकीज़गी के कुछ भी नहीं होगा. तो अक्ल तो सोई पड़ी हुई होगी, अक्ल कहीं नहीं जा सकती है, अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं होता है. तो माइंड इज लोअर माइंड, कार्नल सोल. दिल जो है एक मकाम है, एक स्टेशन है, जो जब पाक किया जाता है तब हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एहसास कर सकते हैं. जब तक वो पाक नहीं है तो उसका मकाम नफ्स अम्मारा के साथ ही नापाकीज़गी में है. अगर हम चाहते हैं that we are able to see नफ्स कहाँ है, दिल कहाँ है, अक्ल कहाँ है, ये शुरुआत में नहीं समझ में आता है. जब तक हम तरक्की नहीं करते, then only we are able to distinguish. वोकेबलरी हम यूज कर सकते हैं, माइंड इज लोअर माइंड, कार्नल सोल, दिल हमारा दिल है और हमारी अक्ल है. All right, and then there's another question. Now, when I focus throughout the day to be with zikr, I get disturbed when worldly interference come. Is that normal? How to handle this? Please advise. सबसे पहले तो मुबारकबाद that you are trying to stay connected. It is very normal to be disturbed by worldly work. We got to do worldly work too, right? हम अपने काम छोड़ तो नहीं देंगे, जो हमारी जॉब्स हैं, जो भी हमारी ड्यूटीज है ड्यूरिंग द डे टाइम, वी गॉट टू डू व्हाट वी नीड टू डू. एक मोमिन सालिक जब वो डिस्टर्ब होता है, यादगिरी में रहता है, वो दोबारा अपने आप को याद दिलाता है. डिस्टर्बेंस विल नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग. जो भी आया हमने उसको डील किया एंड देन इमीडिएटली अपनी यादगिरी में आ गए.
Imam has given us beautiful फरमान, right? Imam ने कहा कि for gents के जेब में तस्बीह रखो, ख़वातीन अपनी पर्स में तस्बीह रखें. Imam also even has given us example कि एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जाते even तुम्हारे पास सेकंड है, या अली का नाम. So have your surroundings built in such a way that reminder is there for you, ताकि आपको याद आए और आप उस जिक्र को जैसे डिस्टर्ब हो फिर यादगिरी में आ. You can do that with practice. Another question, how can we be mindful and develop awareness of us, since you said that to be fully aware of our state of being for our growth and learning? How can we be mindful? Again, it's practice. This is in darjat, right? Shuru mein we are doing the zikr, we are becoming aware how we are following the nafs amara. शुरू में जो है वो खराबियां नजर आती है, अच्छाई नजर नहीं आती, because if we are not walking on the path, we are able to see how does shaitan makes us follow him. If we are able to catch that, we will be able to control. In the beginning हमको अपनी गलतियों को पकड़ना है कि हमने कहाँ गलती की और फिर गलती को replace करना है. It's all about replacement. When we consistently continue to do that, it becomes a habit. हमारी ग्रोथ इल्म की वजह से तो होती रहती है. I hope I've answered your question. जी शबनम. Yeah, I have two questions, right? मैं एक बात ऐसी, पहली एक बात है कि जो जब से मैं आपकी बात सुन रही है ना, ये since I've been listening, right? तो I don't know what is happening that now is quite a few weeks, about 4 or 5 weeks, when I go to say dua to Mukhani Ma, and I say tobo tobo taksida, and suddenly I get tears in my eyes. Even Mukhani Ma look at me, why she's crying? Why is that for? Suddenly I start to get tears in my eyes. Why? Because now you understand what you are doing. You are not just doing mechanically, right? That you are seeking forgiveness, right? Oh yeah. Your heart is connecting. You are seeking tubo taksidar. Yeah. मोला मुके माफ कर दे, पगे तो जब पगे पड़ा थी मुके माफ कर दे. Okay, that's I go. And the second thing, I don't understand this one word of Gina, and that Guru kahe manne maro to manne malo. What is the meaning of that? I don't get that. Okay. Manne maro to Guru kahe manne malo. Guru is Imam. He is saying that when you kill your carnal soul, your man, then you will meet Imam. Okay, so how do you do that? In order to meet Imam, you have to kill your carnal soul or transform your carnal soul. Okay, so how do you do that? How can you kill your carnal soul? That's what we've been talking about, right? Purity of deeds, doing more zikr, ilm, ginan, ibadat, amal ki pakizgi. That's what we've been talking about, right? That choose, every time choose, becoming very mindful, conscious to become an angel and not be friends with shaitan. Been thinking of, since this I've been listening to you all this time, I'm just really curious that if this thing, I knew this thing before, my life might be totally different. Because when I went for Didar, I told you, Mola Papa, look at me for so long, about for 5 minutes he was looking at me, only eye to eye contact. I was crying, but when everything is done, I was still crying outside. I was telling my friend and crying, and they said, "Why are you crying?" So what? I said, I feel so like I was feeling really drujari thati thi mane, right? So I will feel like that. But if it was I heard all this experience about all this religion, might be I would be totally gone for 2-3 days. Might be my thing would be totally different. I wish I had gone that times. Pyare jagya, pyare sawar. Shabnam, no regret. For Ismaili, there is no regret. What can I do anything now? I always ask my question this question to myself, like, what should I do? Can I do anything? Because the way Mola Papa looked at me for so long and I didn't understand that much, what pagal I was, what happened, why he was doing. When Mola sees us, Mola sees our soul, right? And when the soul is not nourished, it is very weak, and Mola becomes worried when our souls are not strong, right? Mola is our spiritual father. He becomes worried.
So when Mola looks at us like that, that means that we do need to become responsible and learn this knowledge so we can make our soul strong and powerful and connect to Imam. Okay. So you need to learn the knowledge. That's why when we Feed your with you, soul. that's why Kudrati had come with you, because I didn't know anything, and suddenly I come with you. That's what is happening. You and Mr. in the Saturday, Sunday, and everything. I'm learning a lot now. Okay, that's what is the question. Mola was trying to tell me, look at my eyes and telling me that try to learn something. Don't just say Bangi every morning and dua and everything, but try to learn something. That's what he's trying to say me. Okay, now I got my answer. Thank you. Shukr Mola. Yes, this is Mola's mercy, Mola's blessing that he guides us very strangely, but yes, he does. Anyone has any other question? Thank you for asking beautiful question. It was really good. Thank you. કોઈને કાંઈ ક્વેશ્ચન કરવું છે વાંધો નહીં ગુજરાતીમાં ઉર્દુમાં તમે કરી શકો છો કમ્ફર્ટેબલ જેમાં બી છો. Yeah, I had a question in the chat. Did I miss it? When we are doing something, example driving or shopping, etc., and tasbih is going on in our minds, we aren't fully attentive. Is it possible to become attentive to both? Yes, it is actually, but it takes long time. It does happen. Mumin and salik, if continues to walk on this path, there comes a time. Remember, that is what we talk about, Ajampiya Jap, right? Ajampiya Jap, when we are talking about, meaning that you are not saying this zikr, but it is happening, and it is related to we having been activated so many angels that they do zikr in our being. And inshallah, in next part, I will hopefully will cover this part. So I have to remember this question. You will inshallah get your answer indirectly, if not 100% related like that. But you understand what I'm saying, right? Yes, thank you. Shukran Mawla. Anyone else? नियामत भाई मैं एक कमेंट कर सकती हूँ मैं, क्योंकि आज आप जो समझाए ना, तो कितने सालों से ये था दिमाग में कि अली पापा बोलते फरिश्ते जैसे बनो, फरिश्ते जैसे, और फिर आप चाहो तो मेरे जैसे भी बन सकते हो. तो यही दिमाग में आता था कि पहले तो फरिश्ते ही कैसे बने कि फिर इमाम के मतलब तक का सोचेंगे. लेकिन आज आपने जो चीज एक सिखाई ना कि यू हैव टू जस्ट चूज, वो कॉन्शियसनेस से खाली चूज भी करो. जैसे ये आप जो क्वेश्चन बार बार मुझे भी आता था कि मैं अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करूं, तो उसके लिए भी मुझे पहले चूज करना है, वो इंटेंशन बांध के बैठना है कि नहीं, मुझे फरिश्ता बनना है और फरिश्ते की सोच से चलना है. तो मेरे ख्याल से हाफ वर्क इज डन. उसके बाद मौला की रहमत मदद से वी कैन डू इट. Yes, I firmly believe it is not us, it is Maula's mercy. हमारे अगर ख्याल ही होते ना अच्छे कि we want to do good, Maula's mercy comes to us and then Maula takes care of us. हमें consistent रहना है हमारे desire में, हमारी नीयत में, हमारे ख्यालात में. थैंक यू भाई माँ, शुक्र मौला भाई माँ. नियामत बेन, जी नियामत बेन, I have one question. એક ફરમાન હતો અહીંયા કે મોલા કે છે કે 12 વાગે કોઈ છે forgive કરું છે sins, કોઈને હું માફી માંગુ, કોઈને હું દુઆ લઈ જાઉં. તો હવે અહીંયા મને જરા confusion છે. Is it 12 midnight કે 3 o'clock? Madrat means 12 actually. 12 midnight, नहीं? So Okay, there are people, because who wake up actually. I have seen friends who do not sleep until they have said tasbih of midnight. And I've seen also, my Nani Ma used to do that she would not go to bed until she has said her tasbih, 12 baje ki, and then she'll go to bed, and then she'll wake up for Bandi. yes, because this is what in Africa they used to do. But I heard a question like this and they said it's 3 o'clock, 3 to 5. So I got confused then. No, there is another farman which says 3 o'clock. Imam Sultan Ahmad Shah's farman, there is a farman of 3 o'clock too. Yeah, but this said 12. Madrat, she said Madrat is 3 o'clock. But I thought Madrat is 12 noon, 12 midnight. Yeah, Madrat is 12. It's not 3 o'clock. 12, right? Okay, thanks. Mother, thank you. Amy Saiba, thank you. Thank you. Mola bless you for all these things. Thank you. Amin, Mejan, Amin.
I go on your duas, you know that, right? All right, friends. Yali Madad. Thank you, Anna Yali Madad. No, I also thank you so much. Shukran wala, shukran wala. Yali Madad. Yali Madad ma, yali Thank Yali you, May Mola Madad. bless you. Thank you. Shukran. Thank you. Thank you. Yali Thank Madad. you, Yali Madad. Yalimda, thank you so much, Mama. Yali Madad. Yalimda. Yali Madad.